started about 15 years back, Okay. and coincidentally we went to Australia, and we went there for a residency. But the time that I had to spend at home was really boring because I had 3 children and all 3 of them used to go to school, and I had nothing else to do but cry, and just cooking. And when you're abroad, you don't have much work to do. So then I planned to join a beauty school. So I joined a beauty school. The reason I joined a beauty school was that my mother was in this field as well. Okay. She's a cosmetologist and she was in America when I was young. So I used to see what my mother was doing, and she used to work in a salon as well. And then she started at home. Okay. Then we shifted to Saudi Arabia, and she had a salon, and I used to see her work. So that also inspired me a lot. So I thought this is a better thing to do as a woman. And while you're home, you can do the same thing. You can work at home. And my children were young when I started this work. And when I came back to Pakistan, I started from a single room in my house, and because I specialized in skin, Okay. so I only did skin from home, and I did facials just from home only when my kids weren't, when they were at school. And I did the pick and drop, I did the cooking, I did everything. Along with that, I did the salon work as well. Oh. So once my children grew up and I was out of the pick and drop, system, then my work also grew. And then I thought it's better that now I start something outside of the house, because थोड़ी सी responsibilities है मेरी घर में कम हो गई थी. Okay. So then I started a salon here. Well, things have changed drastically because I have my basic education from America when I was young, Okay. because my mother was a cosmetologist and she was working there. I had my basic education there, and then once when I came back to Pakistan, then we went to Australia when I got married. So I did all my studies there, and the concepts of abroad, of the European countries, are totally different than what we have in Pakistan. I go for my refreshers every 6 months, and I do advanced courses in skin and all. And times have really changed. एक हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि आपने जो एक फेशियल करना है वो 1 घंटे 1.5 घंटे का होना चाहिए. अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपने पूरा टाइम नहीं दिया क्लाइंट को. बट अब ट्रेंड्स ये आ गए हैं कि एक घंटे का फेशियल जो है आप 20 मिनट्स में, बेटर देन द फेशियल दैट्स बीइंग डन इन 1 hour, you're getting excellent results in 20 minutes. Why? Because we're doing it with machines. We're doing it with products which give excellent results in just 5 minutes. Well, Allah का शुक्र है कि इस लिहाज से I haven't faced anything as yet, because where I was brought up, I was eldest. I had one brother with 3 sisters. So एक वो मुझे इतना वो मुझे नहीं हुआ feel, and now I have 3 sons माशाल्लाह से, तो वो मुझे, क्योंकि बेटी नहीं है तो शायद मुझे इसलिए नहीं करना पड़ा. But around my surroundings, I feel there are a lot of problems which girls are facing because of this male dominant society. और वो male dominancy इतना pressure ले आती है कि औरतें at times बाकी बहुत परेशान हो जाती हैं. If you're working from home, तो I think home, ये जो आपका घर का काम है वो भी एक full time job है. और अगर आप उसमें पिक एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं और बाकी बाहर की एक्सेसरीज कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो मेल्स आपको मिलते हैं ख़ास तौर पे दुकानदार की सूरत में या किसी बैंकर की डीलिंग में, तो ज़ाहिर है वो आदमी ही होते हैं ना. बट टाइम्स हैव चेंज्ड. आई थिंक दे हैव गॉटन क्वाइट बेटर नाउ. वेल, आई थिंक द लेडीज रियली हैव टू बी कॉन्फिडेंट. सबसे पहले तो एजुकेशन, आई थिंक दे हैव टू बी एजुकेटेड, नॉट ओनली मैट्रिक और ओ लेवल, बट एक बेसिक हमारा जो एक एजुकेशन का लेवल है वो इंटर का तो होना चाहिए. ओ लेवल्स, ए लेवल्स तो फिर थोड़ी सी ज़रा हाई इनकम लोगों में आ जाता है. बट गर्ल्स दीज डेज आई फाइंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट बिकॉज दे वांट, एंड आई थिंक दे आर बेटर देन बॉयज नाउ. What do you think? I think they're better than boys now. I think the mothers really have to change their attitude towards their children, the sons,
क्योंकि हम उनके ऊपर पूरी एक नज़र नहीं रख पाते. वी डोंट कीप एन आई ऑन देम कि व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, लड़का है, इसको जाने दो बाहर, कोई बात नहीं. हमारे टाइम में ये होता था कि जब मगरिब से पहले एवरीवन हैज़ टू बी होम. अब वो मगरिब का कॉन्सेप्ट, ईशा का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है. तो थोड़ा सा इट डिपेंड्स ऑन द मदर्स. दे हैव टू कीप एन आई ऑन द चिल्ड्रन. क्योंकि देखिए फादर्स तो लगे होते हैं अपने कामों में, और उनका तो काम है सुबह से लेकर शाम तक. यू नो, दे आर द ब्रेड विनर्स. बट दीज डेज लेडीज मदर्स आर आल्सो ब्रेड विनर्स ऑफ द हाउस. जब तक दो नहीं काम करते, यू कांट हैव अ प्रॉपर लाइफस्टाइल. सो उसमें आई थिंक मदर्स रियली हैव टू वर्क हार्ड ऑन देयर चिल्ड्रन, स्पेशली बॉयज, कि उनके ऊपर नज़र रखी जाए कि व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर. सो यू नो, दे आर प्रोबेबली, आई थिंक वी आर सपोज्ड टू एजुकेट देम प्रॉपर्ली. उनको घर की एनवायरनमेंट इतनी अच्छी मिलनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि हमने बहन की या लड़की की इज्जत हमने किस तरीके से करनी है. बहनों की इज्जतें तो हर कोई कर लेता है, बट एक लड़की जो है उसको हाउ टू ट्रीट देम. I think should understand, खास तौर पे the male members जो हैं, कि you have to grow out to be healthy men in that respect, कि you respect the women outside who are working. You should respect the lady who's working with you in that environment. And I think the girls also, you know, should be confident enough to take them as their male members working in their environment. जब आप एजुकेशन एक अच्छी हो जाती है, जब आप एक हायर लेवल पे को एजुकेशन में आप पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे एक डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है. मदर्स और पेरेंट्स शुड बी इनकरेज. अच्छे को एजुकेशन में अगर आप पढ़ाएंगे तो वहाँ पे लड़का और लड़की की इकट्ठी जो बॉन्डिंग होती है वो उनको पता चल जाता है कि हमने रिस्पेक्ट कहाँ करनी है और किस लेवल तक लेके जानी है. I have a lot of clients coming to me, especially young girls and even ladies coming to me. You know, the bosses, they're harassing the girls, even if it's in the lift, even if it's in the office, they're alone, and those bosses are really harassing them, which I think is a pity for the elderly people. कि आप एक बच्चियों को आज़ादी से अगर आप काम करने दें, वो भी तो घर से निकली हैं किसी न किसी वजह से, और अगर उन्होंने पढ़ लिया है तो उनका राइट बनता है कि वो एक तरीके से काम करें, एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करें. द बेसिक आइडिया व्हिच आई वांट टू कन्वे इज कि अ गर्ल शुड बी अलाउड टू वर्क इन अ सेफ एनवायरनमेंट. इफ शी गेट्स आउट ऑफ द हाउस टू वर्क एंड शी इज एन एजुकेटेड गर्ल, तो प्लीज लेट हर work in a safe environment and don't harass her bila wajah.